Hello bachcho, let's see this question. So the question says assertion, when an object is placed between two plane mirrors, all the images formed are of equal intensity. And the reason is in above situation two plane parallel mirrors, only two images are possible. So we can say that if both assertion region are true, region is correct explanation. Option number B, if both assertion region are true, region is not correct explanation. Option number C, if assertion is true but region is false. Option number D, both assertion region are false. So we can write the key concept here. So what is the key concept? So the key concept is if two plane mirrors are if two plane mirrors are placed parallel to each other and facing each other then images formed from the object placed between them will be infinite. ओके तो इनफाइनाइट इमेजेस फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया रीजन में ओनली टू इमेजेस आर पॉसिबल, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. एंड अगर हम बात करेंगे सो वी कैन से दैट इन दिस पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट जो इमेजेस फॉर्म होती है ना, यहाँ पे जो इमेजेस फॉर्म होती है उन इमेजेस का जो एनर्जी होती है या हम कह सकते हैं इंटेंसिटी, वी कैन से दैट इंटेंसिटी reduced due to multiple reflections. ठीक है, so due to multiple reflections इंटेंसिटी यहाँ पे रिड्यूस होने लग जाती है. सो assertion is यहाँ पे क्या बोला गया कि assertion यहाँ पे सब जगह सेम बोला गया इक्वल इंटेंसिटी, दिस इज रॉन्ग assertion and region is also wrong. So both assertion region are false. So option number D is my final answer. I hope you understood it well. Best of luck.